guys, it's Yashita and welcome back to my channel. So in this video I'm going to be sharing with you guys what I eat in a day. It has been more than 2 years that I started my channel and मैंने आज तक ये वाली वीडियो नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा आज फाइनली मैं इसको बना दूँ. So yeah guys, if you are interested please keep on watching. But before we get started with today's video, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो. Also hit the notification bell so you get notified every time I upload a new video on YouTube. You can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle and yeah, now let's get started with today's video. So ये जो वीडियो होने वाली है आज मैं सिर्फ vlog स्टाइल में ही आपको दिखाऊंगी. So it's going to be a very candid and a very realistic what I eat in a day. And one more thing that I want to tell you guys is that I am not a professional nutritionist कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको ऐसे ही खाना चाहिए या कुछ भी. मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे. फर्स्ट थिंग दैट आई डू आफ्टर आई वेक अप इज़ दैट आई फिल माई बॉटल. सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्टील वाटर बॉटल. इसकी बाहरी कवरिंग प्लास्टिक की है, मुझे लेने से पहले पता नहीं था, बट अंदर से ये स्टील की बॉटल है. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आई एम गोना लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पर इतनी कुछ खास नहीं है, यू कैन डेफिनेटली फाइंड बेटर बॉटल्स. आई रियली डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड टॉकिंग अबाउट बॉटल, बट ये है 1 लीटर की एंड आई ट्राई टू कंज्यूम like almost 3 to 4 of these. I try to at least have 4 of these, but कभी कभार नहीं हो पाता है. So now I'm gonna go and have my breakfast. Breakfast बन चुका होगा and I'm really hungry. So let's see आज breakfast में क्या बना है. Okay guys, so this is what I'm having for breakfast today. So this is paneer sandwich and I really like this one. So I have it usually with a little bit of ketchup as you can see. So I'm really hungry. I'm gonna start with my breakfast. आज ये पनीर सैंडविच बना है जो कभी कभार बनता है, पर यूजुअल जो मेरे ब्रेकफास्ट होता है वो होता है या तो प्लेन टोस्ट विद चाय या फिर ऑमलेट या फिर बॉइल्ड एग्स. कभी कभार इट्स ऑल्सो पराठा, जैसे सबके घर में बनता होगा पराठा. उपमा भी मैं ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ. पोहा मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी मॉम का फेवरेट है इसलिए जब वो बनता है मैं खा लेती हूँ, पर मुझे इतना पसंद नहीं है. मैं यूजुअली मुझे यही सब ज़्यादा पसंद आता है. और हाँ, मूंग दाल का चीला बहुत बनता है हमारे घर ब्रेकफास्ट में. सो या आई जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइज लाइक एन आइडिया कि क्या मेरे यूजुअल ब्रेकफास्ट होते हैं. Okay guys, so I just got ready. I have to film some videos, but it has been a little while since I had my breakfast. So now I'm gonna have my favorite little immunity booster gummies from Kapiva. I have been having these amla and vitamin C enriched gummies to help improve my immunity for some time now. So obviously due to the current situation it has been really important to take care of our immunities. I have always mentioned the same in my videos. I have been having 2 of these daily. As you can see थोड़ी सी बची है, मुझे एक और पैक ऑर्डर करना पड़ेगा जल्दी ही. These gummies are enriched with amla which can help in elevating your immunity levels with its antioxidant properties, and at the same time this will also fulfill your daily vitamin C requirements. So I have been having 2 of these every day and to be honest I have been really enjoying these because they are quite tasty. इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It has that fruity and tangy flavor which I love. You can also give these to kids, but for a kid only 1 is enough. Also another thing that I really like about these gummies is its packaging. So as you can see each gummy is packed separately. So ये बहुत convenient हो जाता है. अगर आपको travel भी करना है you can easily carry these in your bags and you will be good to go. So you can literally take this anywhere with you. These gummies are gelatin free, vegan and gluten free with no artificial colors and flavors. So they are actually perfect for everybody. I'm gonna be leaving all the links and the details in the description box down below so you guys can check it out. Also in the meanwhile I'm gonna have my 1 remaining gummy and I'm gonna go ahead and start with my shoot, and then I'm gonna see you guys at lunchtime. It is currently 12:30 PM and I'm taking a little break from my filming. मैंने बोला था मैं lunch time में मिलूंगी, but I'm having some नारियल पानी right now. So this is what I have every day. My moms make sure to give me this every day. And इसको हम निकाल के मैं ऐसे ग्लास में पीती हूँ रोज़. So I will quickly have this and then I'm gonna have my lunch around 2:33 PM. And अभी इसको पीने के बाद I'm gonna get back to filming and then इस बार पक्का I'll see you at lunch time.
is what is made for lunch today. We have a lot of variety. So first we have mixed veg जो मैं खाने वाली हूँ. Then we have दाल जो हर दिन बनती है हमारे घर. This is like a compulsory thing. तो येलो दाल. Then we have क्या है ये, बैगन आलू की सब्ज़ी. हाँ. ओके, तो ये बैगन आलू की सब्ज़ी है जो मैं नहीं खाऊंगी. Then we have तोरई, वो भी मैं नहीं खाऊंगी. ये सब मम्मा और मेरा भाई खाता है. And then we have green chutney, fresh green chutney. ये भी रोज़ बनती है हमारे घर, ये मैं थोड़ी सी लूँगी. And then we have rice. Okay guys, so this is my plate for my lunch. मैंने लिया है मिक्स वेज बहुत सारा, दाल, then one रोटी with some घी. मुझे गरम गरम घी वाली रोटी बहुत पसंद है, तो ये ज़रूर होता है मेरे पास. एंड आज मैंने एक ही रोटी ली है क्योंकि मैं चावल भी लेके आई हूँ. सो आई एम गोना हैव सम राइस, वन रोटी, एंड देन आई ऑल्सो हैव सम चटनी. लंच आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड. मम्मा के हाथ की ये जो मिक्स वेज है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है. आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, मैं इतने जल्दी खा रही हूँ ना. सो गाइज, आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ ईटिंग ऑन अ बेड. अभी मैं मॉम के रूम में हूँ. शी इज़ वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स. इतनी बोरिंग मूवी है, गिन्नी वेज सन्नी या सन्नी वेज गिन्नी, पता नहीं क्या, बट मैं भी गिन्नी जो भी है मैं उनके साथ देख रही हूँ अभी यहाँ पे. मेरी आदत है कुछ भी खाते टाइम मुझे कुछ देखना होता है हमेशा. या तो मैं अपने पसंद के शोज़ देखती हूँ, वरना मैं कुछ भी देखती हूँ, which is not a good thing, but this is what I do. So I'm gonna have my lunch, rest for a while, and then I'll get back to work. So yeah, अभी मैं lunch enjoy कर लेती हूँ, and then I'll see you at dessert time क्योंकि dessert भी है. So I'll see you then. Hey guys, so I just finished my lunch and this is what I'm gonna have for my dessert. So this is banana walnut cake and ये पूरे आटे का ही बना हुआ है, मॉम बनाती है. ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे. जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा दैट आई एम अ बिग स्वीट टूथ. मुझे मीठे के बिना मेरा काम चलता ही नहीं है. तो इसीलिए मम्मा को कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा सोच के रखना पड़ता है. अगर कुछ नहीं होगा मेरे पास तो मैं मीठी दही खा लेती हूँ. सो या I have a little sweet problem, but this is so yummy. और ये आटे का बना है तो ये अनहेल्दी भी नहीं है, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं किसी और व्लॉग में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. Okay guys, so it is 6 PM right now and I'm done with all of my filming portion of the day. So I have changed into this more comfortable t-shirt. So now I'm gonna have a glass of lassi. मैं हर शाम को सिर्फ लस्सी नहीं लेती हूँ, कभी कभार मैं लंच के साथ या लंच से थोड़ी देर पहले छाछ पी लेती हूँ. आज मेरा लस्सी पीने का मन करा, so I'm having this. So I'm just gonna go in my balcony, sit, relax and enjoy my lassi. Almost dinner time and आज डिनर में my brother is actually gonna cook butter chicken for both of us. सिर्फ मेरे और उसके लिए. my mom is a vegetarian, वो नहीं खाएंगी, but I'm very excited. काफ़ी दिनों के बाद I'm gonna have butter chicken, so I'm gonna give you guys a little sneak peek here and there. Hey guys, so dinner is served. This is our butter chicken. Looks really delicious. And here is तंदूरी रोटी. मॉम ने इसके साथ तंदूरी रोटी ही बना दी क्योंकि बटर चिकन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. So I'm gonna quickly serve myself and let's go and eat. So delicious. I am so happy with today's dinner. ऐसा नहीं है कि हम रोज़ चिकन खाते हैं, हम इनफैक्ट महीने में 1-2 बार ही खाते हैं. एंड आज बहुत इम्प्रॉम्प्टू सा प्लान बन गया हमारे घर में. एंड
my brother decided to cook this and I'm so happy. So yeah, I'm just gonna keep the camera aside now और मैं इसको आराम से बैठ के धीरे धीरे खा के enjoy करूँगी and then I'm gonna see you guys after my dinner. So guys, I think I'm gonna end this video right here. I just had my dinner. My stomach is so full. मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारा खा लिया है आज. But today was a fun day and I really hope you guys enjoyed watching what I eat in a day. And yeah, if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. Also comment section में मुझे बताओ आपको आगे कौन सी videos देखनी है. I know you guys want to watch me living in my balcony for 24 hours, so that will come up soon. And yeah guys, अगर यहाँ तक video देखी है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना and अपना ध्यान रखो, immunity strong रखो और सारे precautions लो. And I'm gonna see you guys next time. Bye.